नमस्कार अर्गस अपडेट सहित मु मंदाकिनी प्रथम देखिबा हेडलाइंस। मनरे कोह ओ क्रोध काहाकू पचारिबे प्रश्न। जाजपुर रसुलपुर एनए 16 रे बड़ घटना 10 फुट तलकू दबिला पोल। बालेश्वर भुवनेश्वर को संजोग करुवा राजपथ बंद अटकी रही बहु गाड़ी मत। बदलुची भारत देश में रेकर्ड स्तर में कमिला गरीबी हार 5 वर्ष में गरीबी ऊर्ध्व को उठी 13.5 कोटी जनता। बहुमुखी रिपोर्ट प्रकाश कला नीति आयोग। मोदी सरकार को योजनार मिलुछि सुफल। आज नुआदिल्ली में बसिब एनडीए विशाल बैठक 2024 बीजेपी बड़ गेम प्लान। बैठक में 38 रु अधिक दल सामिल होगा चर्चा। मोदी को तृतीय थर बड़ विजय व्यवधान में जिताइबा तैयारी हेब रणनीति। सरकार का माल दरिया में डाल। अनुगुल बंरपाड़ ब्लॉक परिसर में खत खाऊची 50 रु अधिक ट्राइसाइकेल। एपटे गरीब भिन्नक्षम सेवारू वंचित। वीडियो जानी ना केबे आसिला किए पाइबे। प्रशासन संवेदनहीनता को नहीं उठिला प्रश्न। पूज्य पूजा प्रति ये की सम्मान। पद्मभूषण मनोज दास को कवि सीमित करदेले राज्य सरकार। बालेश्वर स्मृतिपीठ फलक त्रुटि कुरी घेरिले सारस्वत प्रेमी। अंतर्जातीय ख्याति संपन्न कथाकार प्रति यह अवहेला ना अवज्ञा। कंटाबांझी को जिला मान्यता दाबी। जिला संघर्ष समिति पक्षर 12 घंटिया कंटाबांझी बंद डाकरा। दुकान बजार गाड़ी मोटर सरकारी और बेसरकारी अनुष्ठान बंद। विभिन्न संगठन कार्यकर्ता सामिल। एवं 24 घंटा मध्य सृष्टि हेबा आउ एक घूर्णिबलय। कालिठू राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना। 20 रु बढ़िबा वर्षार विस्तृति। 21 रु भिजिब सारा ओडिशा। जाजपुर रसुलपुर एनए 16 रे बड़ अघटन। रसुलपुर ब्लॉक कार्यालय निकट में भुशुड़ा ब्रिज। राजपथर 10 फुट तलकू खसी जाइछि ब्रिज। बालेश्वर भुवनेश्वर को आसिबा राजपथ वर्तमान बंद रही। अटकी रही बहु संख्यक बस ट्रक कार और बाइक। गाड़ी चलाचल स्वाभाविक करने को जारी रही प्रचेष्टा। आम घर छात पर ठिया गोटे आवाज है। आवाज है देख मोटरसाइकेल बाहर करके ब्लॉक थकू आसी ब्लॉक तक देख ब्रिजटा गली पड़ी। माँ बस पास कलापर ब्रिजटा गली पड़ी। तापर आउ कौन जानबाहन आसी 6:15 ରୁ 20 भितर टाइम हम ना गाड़ी फाड़ी ऑटोमेटिक लोक जनसाधारण आसी पहुँची गले से गाड़ी गोटे आड़ पकईकी गाड़ी रखागला। यही सब बंद कर पुलिस वाला आसी गाड़ी बंद कले। ब्रिजटा 7 वर्ष कि 8 वर्ष भितर ब्रिज। तेज संपर्क में अधिक अपडेट देवाई आम सहित सीधा सड़क घटनास्थल जोड़ी आम प्रतिनिधि परमेश्वर बेउरिया। परमेश्वर, घटनास्थल में आप लगातार भाव अच्छा स्थिति देखुं। प्रशासन क्यों क्यों अधिकारी मैंने वर्तमान सेठारे आसी पहुंचले कौन पदक्षेप सब ग्रहण करागलानी? निहाती मंदाकिन देखूँ जो सकाल समय जो 16 नंबर जातीय राजपथर कुआखिया निकट में जो ब्रिजटी गली भुशुड़ी पड़ता ताफल हे तो कौन धनजीवन क्षति होनी किंतु यातायात बाधाप्राप्त होती। सीधा सड़क आम आलोचना करवा आम सहित एनएचआई पीडी रही सहित सीधा सड़क आलोचना करवा जे प्रथम आसिक प्राथमिक तदंत से कर सारी घटना विषय से जानी सारी सीधा सड़क आम सहित आलोचना करवा जे घटना कौन रही किपर भाव में घटना घटला और केबे पोल निर्माण होता ये समस्त तथ्य आम निश्चित जाना चेष्टा करवा। कारण 16 नंबर जो जातीय राजपथ रही निश्चित भाव में कहीपर गोटे गुरुत्वपूर्ण रास्ता जी कि कोलकाता चेन्नई को संजोग करुच्ची और ओडिशार गोटे लाइफ लाइन बोली कहुच्छी। तो सीधा सड़क आम आलोचना करवा। रिस्टोर नहीं हो पा रहा है। रिस्टोर कितने समय लगेगा सर? अब ये रिस्टोर का समय जो है हम ऐसे तुरंत नहीं बता सकते क्योंकि ये समय एक्सपर्ट कमेटी आने के बाद कितना लेवल का डैमेज है और किस तरह का है उसको कैसे रिस्टोर करना है उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको रिस्टोर कर लिया जाए। यातायात का कैसे हुआ है? यातायात को डाइवर्जन दिया गया है। डाइवर्जन से ट्रैफिक निकाल करके हम लोग इसको यातायात को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप फास्ट आए थे इंक्वायरी किए थे क्या लग रहा है अभी? ये ऐसा लग रहा है कि ये इस ब्रिज में स्ट्रक्चर फेल्योर की वजह से कोई वो हुआ है। हाँ जी। अभी सर मतलब कितने दिन का अंडर इसका रिस्टोरेशन का काम तो हम तुरंत चालू करने की कोशिश में नजर रखु
मु फेरबी परवर्ती बुलेटिन रे आपणक निकट को तेबे वर्तमान आसंतु वर्तमान आदानी ग्रुप रो एनुअल जनरल मीटिंग चले आसंतु नजर पकेबार सीधा सड़क दृश्य उपरे time to look back, we also realize how much ground we have covered over the past 30 years. Along this journey, if there is one characteristic that has continued to define us, it has been our resilience. The resilience that allow us to get up stronger every time we take a hit. The resilience that drives our belief in the nation we call our Matrubhumi. And the resilience that gives us the passion to follow our dreams. And I will touch upon each of these today. As all of you are aware, on the eve of Republic Day this year, a US-based short seller published a report to short our stocks. Just as we are planning to launch the largest follow-on public offering in India's history. The report was a combination of a targeted misinformation and discredited allegations, the majority of them dating from 2004 to 2015. They were all settled by appropriate authorities at that time. This report was a deliberate and a malicious attempt aimed at damaging our reputations and generating profits through a short-term drive down on our stock prices. Subsequently, despite a fully subscribed FPO, we decided to withdraw and return the money to our investors to protect their interest. While we promptly issue a comprehensive rebuttal, various vested interests try to exploit the claims made by the short seller. These entities encouraged and promoted a false narratives across various news and social media platforms. Consequently, the Honorable Supreme Court of India constituted an expert committee to look into this matter. The committee included individuals known for their independence and integrity. The report of the expert committee was made public in May 2023. The expert committee did not find any regulatory failure. The committee's report not only observed that the mitigating measures undertaken by your company helped rebuild confidence, but also cited that there were credible charges of targeted destabilization of the Indian markets. It also confirmed
the quality of our group's disclosures and found no instance of any breach. While SEBI is still to submit its report, we remain confident of our governance and disclosure standards. It is my commitment that we will continue to strive to keep improving this every single day. Our track records speaks for itself, and I am grateful for the support our stakeholders has shown as we went through these challenges. It is worth noting that even during this crisis, not only did we raise several billions from international investors, but also that no credit agencies in India or abroad cut any of our ratings. This is the strongest validation of the belief that the investors have in your company's governance and capital allocation practices. Over the past decade, one statement that I have repeated dozens of times is my belief in the future of the nation we call our Matrubhumi. Let me try and set some context. Today, there can be no denying that the world is continuing to be hit by multiple shocks, be it the climate emergency, geopolitical challenges, supply chain and energy volatility, or a persistent inflation. We have never had a time when such events were happening simultaneously without a clear solution in sight. Add to these opportunities and challenges because of the technological revolutions, especially the breathtaking advances in artificial intelligence, and what we have is a massive potential reset in the existing global operating models, the future of work, the future of learning, the future of medicine, and in some ways, the future of economic growth itself will need to be reset. Therefore, as we end one financial year and begin another, it is important to take a step back and assess the global situation and India's position as part of this landscape. While economic cycles are getting increasingly hard to forecast, there is a little doubt that India, already world's fifth largest economy, will become the world's third largest economy well before 2030, and thereafter the world's second largest economy by 2050. It is well understood that for any economy to implement policy and lay the foundation of growth, a stable government is critical. And we have seen this impact
with the implementation of several structural reforms that are critical for a strong, sustainable, and a balanced growth. This stability, coupled with India's demographics and a continued expansion of our internal demand, is a potent combination. Our nation's demographic dividend is expected to drive consumptions and accelerate the growth of a tax-paying society at a record pace. The United Nations Population Fund projects that India's median age will be just 38 years even in 2050. Over this period, India's population is expected to grow by approximately 15% to 1.6 billion, but the per capita income will accelerate by over 700% to about $16,000. On a purchasing power parity basis, this per capita metric will be 3 to 4 times higher. And we have the statistics to prove it. Following our independence, it took us 58 years to get to our first $1 trillion of GDP, 12 years to get the next trillion, and just 5 years for the third trillion. I anticipate that within the next decade, India will start adding $1 trillion to its GDP every 18 months. This puts us on track to be a $25 to $30 trillion economy by 2050. आपण मैंने देखुले अदानी ग्रुप रो एनुअल जनरल मीटिंग रो सीधा सलक दृश्य समय जो गोटे छोटिया ब्रेक रो मनरे कोह ओ क्रोध काहाकू पचारिबे प्रश्न किए देबो उत्तर आपणक प्रश्नर 42 मंच प्रश्नकाल सोमवार रु शुक्रवार राति 8:30। जय जगन्नाथ चकाखी सबू देखुछि आमे लड़ीबू साधारण ओडियांक न्यायर लड़ी किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती किए भी पार्टी रे तुंडी दे बसु किंतु आमे कहिबू रोक ठोक राज्य आमर भोट आमर सरकार आमर आम विकास भी हेबो आम कथारे चोरी चपाटी पिसीर आमे करिबू विरोध आपण करिबे निष्पत्ति महापंचायत रविवार राति 8टारे। लोक कल्याण पई गणतंत्र ओ सरकार माଳ माଳ योजना योजनार लाभ मिलुची तो सर्वसाधारण केउ योजनार स्थिति कौन भूल इंजेक्शन जोगु शिशु मृत्यु अभियोग
जाजपुर दशरथपुर ब्लॉक मंधारखंड छकरे मेडिसिन दुकान भूल इंजेक्शन रे 5 वर्षर शिशुर मृत्यु घटी। मृतक होउछन्ती दशरथपुर थाना मुगुपदा अंचलर सुरेन्द्र मल्लिकर पुओ ओम। शिशुर झाड़ाबांति हेउतबा बेले से प्रथमे एक स्थानीय मेडिसिन दुकान रे पचारिबारु दुकानी एका संगे 2टी इंजेक्शन देबाकू परामर्श देथिले। इंजेक्शन देबा परे शिशुटीर अवस्था गुरुतर हेबारु ताको संपृक्त दुकानी गाड़ी रे पिलाटीकू जाजपुर मुख्य चिकित्सालय आणुथिले। चिकित्सालय रे पहुंचीपा भितरे शिशुटीर मृत्यु होई जायथिला। या परे दुकानी हॉस्पिटल पिलाटीकू छाड़ी फेरार होई जायछि। शिशुटीर मृतदेह जाजपुर मुख्य चिकित्सालय रे व्यवच्छेद पई रखा जायछि। घटनार तदंत आरंभ होइछि। नुआपड़ा बोडेन थाना राजपुर निकट में सड़क दुर्घटना अजणा गाड़ी धक्कर जाम गाँवर जड़े वृद्धंकर मृत्यु घटी। क्षतिपूरण दाबी में मृतदेह रखी बिजु एक्सप्रेस अवरोध कर परिवार लोके और ग्रामवासी। रास्तार दुई पटे अटकी रही शह शह गाड़ी। घटनास्थल में पहुंची तदंत करुछि बोडेन थाना पुलिस। आमर जामगाँर जड़े वृद्ध लोक 4:30 से शौच कर बाहर के जाते अजणा गाड़ी धक्कर स्पॉट डेथ होती। आम दाबी कर गाँ वाले सरकार को क्षतिपूरण देने बेसी भल हाँ से गरीब लोग एक्सीडेंट होचे कहीं 4 ओवर ज़्यादा एक्सीडेंट होचे से सरकार टे ध्यान देवा कथा। और प्रत्येक जगह पाखे गोटे सीसीटीवी फुटेज जरूरी। और यहाँ गोटे स्कूल एरिया तो इनक ओभर ब्रिज आम दाबी उपस्थापन करम सरकार पाखे। पद्मभूषण मनोज दास को कभी सीमित करदे राज्य सरकार। स्मृतिपीठ सामने जो सरकारी फलक लगी स्वर्गत मनोज दास को जो संबोधन एबे विवाद। पद्मभूषण प्रति एभली अवज्ञा सारस्वत प्रेमी को देछि घोर आघात। निहाती दुखर कथा सहित घोषणा करुच्ची नवीन बाबू जो लोक मान सब सेटिंग कर रखुंट से भितर साधारण ज्ञान तैयारी हवा दरकार। होर्डिंग रे फोटो आगे चेंज होगा उचित। बर्तमान जदि करना अनुरोध कर गवर्नमेंट को जे मनोज बाबू फोटो सेठी निहाती बसवा दरकार। पूज्य पूजा प्रति ये किभली सम्मान। पद्मभूषण मनोज दास को कबिरे सीमित करदेले राज्य सरकार। स्मृतिपीठ फलक त्रुटि को नहीं घेरिले सारस्वत प्रेमी। अंतर्जातीय ख्याति संपन्न कथाकार प्रति यह अवहेला ना अवज्ञा। बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक संखारी गाँव में 6 कोटी 90 लाख टंका व्यय स्मृतिपीठ निर्माण चली। अंतर्जातीय ख्याति संपन्न कथाकार विशिष्ट उपन्यासिक प्राबंधिक तथा गाल्पिक पद्मभूषण मनोज दास पैतृक बासभवन उन्नतीकरण। तेबे स्मृतिपीठ सामने जो सरकारी फलक लगी स्वर्गत मनोज दास को जो संबोधन करा विवाद। केवल कवि परिचय यही अंतर्जातीय ख्याति संपन्न सारस्वत साधकों को सीमित रखिदे राज्य सरकार। पद्मभूषण का प्रति अवज्ञा सारस्वत प्रेमी को घोर आघात देछि। निहाती दुखर कथा सहित घोषणा करुच्ची नवीन बाबू जो लोक मान सब सेटिंग कर रखुंट से भितर साधारण ज्ञान तैयारी हवा दरकार। से भितर कन्सासनेस रिगार्डेबल अटेंशन रहा दरकार। एवं मनोज बाबू भली लोक फोटो रहा कथा। खाली कवि नुहे आंतर्जातिक ख्याति संपन्न कथाकार विख्यात सारस्वत साधक कवि मनोज दास लिखी भल होता। होर्डिंग रे फोटो आगे चेंज होगा उचित। बर्तमान जदि करना अनुरोध कर गवर्नमेंट को जे मनोज बाबू फोटो सेठी निहाती बसवा दरकार। एवं मनमोहन दास फोटो मत दुई भाई बसिले हमको विकसित लगे आह्लाद लगे। नवीन बाबू तो ओडिया जानी ना तांकू परिचालना करुँच 5T सचिव पांडियान। से पांडियान तो अण ओडिया। तेणु ओडिशार ऐतिह्य को नष्ट करने नष्ट करी गोटे राजनैतिक माइलेज नापी जो लोकार्पणर जो होर्डिंग दि जाए संग्रहालय जो लोकार्पणर होर्डिंग से होर्डिंग रे जो जहाँ उद्देश्य रे ये कार्यक्रम हवापाई जाऊँगी आसंता 29 तारीख हवापाई जाऊँगी से कार्यक्रम रे अति दुखर सह कहवाई पड़ुछि जे आमर डॉक्टर मनमथनाथ दास एवं डॉक्टर मनोज दास तांकर फोटो नहीं परंतु फोटो अच्छी कार ना नवीन बाबू को फोटो अच्छी। ये जो यही कथा मनोज दास एवं मनमथ दास को अपमान नुहे कि राज्य सरकार निज प्रचार करंतु बना नहीं किंतु जहां का स्मृति रे एते टंका खर्च करा जाउछि फलकरे तांका फोटो लगाइबाकू
किपरि भूलिगले राज्य सरकार पूज्य पूजा प्रति चरम अवहेलार याठू बड़ा प्रमाण आउ कण होई पारे। तेबे मनोज मनमथ फाउंडेशन रो जुग्म संपादकंक सफेई हला तरतर रे एपरि होई जाइथिबो। बासगृह आपंकर उन्नतीकरण जो कार्यक्रम हो प्रश्न कले कवि मनोज दास कहीं लिखाई तो जिन तरतर होगी आप जहाँ तो मनोज दास को अनेक अच्छी कौन जहाँ विशेषण अच्छी से घातसंपन्न कथाकार जो विशिष्ट लेखक जो आध्यात्मिक साधक कितनी अच्छी तो खाली कवि भाव सीमित कर दिया तो आम से बाबद पचारूँ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को से जो वर्कआउटा आमको देखले एग्रीमेंट जोटा आप लिखाई रेस्टोरेशन ऑफ पोएट मनोज दास फैमिली हाउस एट शंखारी इन भोगरे अंडा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट लिखाई जो कल्चर डिपार्टमेंट से प्रोजेक्टा देती हो तरतर प्रोजेक्टा लिखा भूली जाइए संशोधन कर दिया परवर्ती समय। अंतर्जातीय ख्याति संपन्न कथाकार पद्मभूषण मनोज दास और तांका भाई तथा विशिष्ट ऐतिहासिक मनमथनाथ दास स्मृति रक्षा पाई सेमानंक जन्म माटी रे निर्माण हेउछि मनोज मनमथ स्मारकी स्मृतिपीठ। सारस्वत जगत को रुधिवंत करिथिबा मनोज को स्मृतिपीठ फलकर एभली त्रुटि विरोध रे सारा राज्य उठी प्रतिवाद स्वर। बालेश्वर भोगराई प्रदीप कुमार महाती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय सचिव बुलेटिन के रखिबा नमस्कार। जुग जुग धरी जो एलोवेरा